Hello my dear children, welcome back to the Acknowledge series by Amit Publishing House. Children, my name is Vandana and we are doing Science Class 8. Today, this is your book children and the name of the book is Science Horizon, Inspiring Tomorrow's Innovators. So today we are going to start with a new chapter. This is chapter number 6 of your book and the name of the chapter is Reproduction. So, in this chapter, we are going to learn about asexual reproduction, cloning, sexual reproduction in humans, male reproduction system, female reproduction system, fertilization, gestation period, and childbirth, types of fertilization, viviparous and oviparous animals, and adolescence, pregnancy. So, reproduction is an important process responsible for the continuity of life on the planet Earth. So, ये जो reproduction है वो काफी बहुत ज़्यादा important process है. क्यों? इसलिए ताकि life Earth पे हमेशा बनी रहे. Reproduction is defined as a process of producing the offspring of one's own kind. So, reproduction क्या है? ये है produce करना अपने ही जैसे young ones को. It helps in increasing the population of a particular species generation after generation. So, एक तरीके की प्रजाति को जन्म देना ही reproduction है. This is the fundamental feature of the existence of all लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ. सो ये जो है एक फंडामेंटल फीचर है जितने भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं हर एक लाइफ फॉर्म का जो भी अर्थ पे है. देयर आर टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. द फर्स्ट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेकंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. टेबल शोज द डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. सो यहाँ पे हम टेबल देख सकते हैं जिसमें दोनों मोड्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है. सो लेट्स लर्न. द फीचर्स आर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व. सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने इंडिविजुअल्स की जरूरत है? ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व. सिर्फ एक ही पेरेंट की जरूरत होती है इसमें. बट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व. नाउ इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स. कितने गैमेट्स होने चाहिए? Gametes are not produced. इस केस में gametes produce नहीं होते हैं and two types of gametes are produced to form a zygote. So zygote के बनने के लिए two types के gametes की जरूरत होती है. Found in lower organisms like algae, hydra, etc. So ये जो है lower organisms जो हैं उनके अंदर हमें मिलता है जैसे कि algae हो गया, hydra हो गया. And it is found in higher invertebrates and all vertebrates. Now, what is the time period? इसका time period काफी कम होता है, less, and it has more time period. Number of offsprings produced. So कितने offspring produce होते हैं? 2 or more than 2. तो 2 होते हैं या फिर 2 से ज़्यादा. And 1 minimum or more than 1. सो इस केस में जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो एक या फिर एक से ज्यादा. कंपैरिजन ऑफ फीचर्स ऑफ ऑफस्प्रिंग टू पेरेंट्स. अब जो पेरेंट्स हैं और ऑफस्प्रिंग है दोनों के जो फीचर्स हैं वो कैसे होते हैं? ऑफस्प्रिंग्स आर एग्जैक्टली सिमिलर टू पेरेंट्स. सो जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो एकदम सेम अपने पेरेंट की तरह दिखते हैं. ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस लुक डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट्स but they possess some similar features of the parents. So इस केस में offspring जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स से थोड़े बहुत अलग दिखते हैं लेकिन कुछ फीचर्स सेम होते हैं जो पेरेंट्स के होते हैं वही ऑफस्प्रिंग्स में भी आते हैं. Now the next topic that we are going to learn is asexual reproduction. It is the simplest mode of reproduction in which only one sex is involved. So ये एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें सिर्फ एक ही सेक्स की जरूरत होती है
And in this type of reproduction, young ones are formed from cells of the single parent and are identical copies of the parents. So इस केस में क्या होता है, सिर्फ सिंगल पेरेंट के सेल की जरूरत होती है और ये जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो एकदम ट्रू कॉपी होते हैं अपने पेरेंट्स के. The organisms are reproduced through asexual reproduction. और जो ऑर्गेनिज्म है इन्हें जो है asexual reproduction से प्रोड्यूस किया जाता है. And their examples are amoeba, hydra, yeast, starfish, worms and sponges. There are two forms of asexual reproduction. दो तरीके हैं, दो forms हैं. The first is binary fission. In the binary fission, the parent cell divides into two equal individuals. So binary fission में क्या होता है, जो parent cell होता है वो दो equal parts में divide हो जाता है. Let us see how binary fission occurs in an amoeba. See the given ahead figure. The nucleus divides into two parts. Thus, each part receives a nucleus and is followed by the division. So here you can see this is a picture of an amoeba. This is a fully grown amoeba and in the middle you can see there is a nucleus. अब जो है जब ये रिप्रोड्यूस करते हैं तो न्यूक्लियस आप देख सकते हो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहा है. सो न्यूक्लियस टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, आप देख सकते हो उसका लेंथ भी बढ़ता चला जा रहा है. नेक्स्ट अब फर्दर इट इज बीइंग डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. अब दो अलग अलग न्यूक्लियस हो चुके हैं एक ही अमीबा में एंड अमीबा इज आल्सो डिवाइडिंग. साइटोप्लाज्म इज डिवाइड्स. दिस साइटोप्लाज्म इज डिवाइडिंग एंड देन you can see these two become two separate amoebas. अब दो separate amoebas दिखेंगे आपको और ये दोनों अपने parent की तरह exactly same दिखते हैं. So this was a parent and these are the two daughter cells. So it divides cytoplasm into two parts. A constriction develops in the body of the mature unicellular organism which divides to form two identical daughter cells. जो divide करके दो identical daughter cells बन जाते हैं. Each daughter cell finally grows up into a full size amoeba. और हर daughter cell जो है धीरे धीरे करके एक full size amoeba में develop हो जाता है and the process goes on. Now the second process that we are going to learn is budding. This kind of reproduction can be seen in hydra and yeast. So hydra या फिर ईस्ट है, इसके अंदर आप इस तरीके का रिप्रोडक्शन देख सकते हो. बडिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच अ न्यू इंडिविजुअल डेवलप्स एंड आउटग्रोथ फ्रॉम द सिंगल पेरेंट. सो बडिंग में क्या होता है, ये जो पेरेंट है आप देख सकते हो टेंटिकल्स हैं. अब पेरेंट में से ही एक छोटा बड निकलता है धीरे धीरे, उस वो भी एक हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाता है, उसके भी टेंटिकल्स हो जाते हैं और ये हाइड्रा कुछ टाइम के बाद पेरेंट की बॉडी से रिमूव होके न्यू हाइड्रा बन जाता है. सो दीज आउटग्रोथ्स आर रिफर्ड टू एज बड्स. दीज बड्स स्लोली एनलार्ज एंड सेपरेट देमसेल्व्स. ये बड्स धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं और अपने आप को सेपरेट कर लेते हैं फ्रॉम द पेरेंट्स बॉडी, पेरेंट्स की बॉडी में से, एंड ग्रो इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म. The figure given below shows how budding occurs in hydra and yeast. तो यहाँ भी हमने hydra के बारे में पढ़ा. अब यहाँ पे yeast को देखते हैं कि you can see there is a nucleus in between the yeast cell. Now a bud is formed here. आप देख सकते हो एक बल्ज है यहाँ और इस बल्ज को ही हम बड कहते हैं. अब आप देख सकते हो न्यूक्लियस यहाँ तक डिवाइड हो चुका है. अब ये जो बड है वो टोटल जो है स्फेरिकल शेप ले रहा है और न्यूक्लियाई यहाँ पे आके सेटल डाउन हो चुका है. अब इसी तरीके से डिफरेंट बड्स बनते चले गए और न्यूक्लियाई जो डिवाइड होता गया और डॉटर यीस्ट बनते चले गए. व्हाट इज क्लोनिंग? क्लोनिंग इज डिफरेंट, डिफाइंड एज अ प्रोडक्शन ऑफ एन आइडेंटिकल सेल और एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय असेक्सुअल मीन्स. सो क्लोनिंग क्या है? प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल सेल, एक जैसे आइडेंटिकल सेल्स का बनना किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में बाय असेक्सुअल मीन्स. असेक्सुअल मीन्स से फर्स्ट क्लोनिंग वाज सक्सेसफुली डन बाय Ian Wilmot and his colleagues
at the Roslin Institute of Edinburgh, Scotland. So आयन विलमिथ अपनी कलीग्स के साथ इन्होंने स्कॉटलैंड में ये पहली बार इसे पॉसिबल किया था. They cloned the sheep named Dolly on July 5, 1996. तो उन्होंने जो एक शीप है जिसका नाम था डॉली, उसे जो है क्लोन किया था पहली बार कब? जुलाई 5, 1996 में. Now let us see how it was done. चलिए देखते हैं कैसे हुआ था. Here you can see the diagram is given the technique of cloning dolly sheep from Finn Dorset sheep. So आप देख सकते हो कैसे एग सेल डोनर है, फिर एग सेल्स लिए गए जिसमें साइटोप्लाज्म था, न्यूक्लियस था और डीएनए था. दिस वाज एन अनफर्टिलाइज्ड एग सेल. फिर माइक्रोपाइपेट, then nucleus was removed, enucleated egg cell, then cell was fused, electrical pulses, and then fertilization was done and cell was divided, embryo was made, embryo was implanted in the surrogate mother. surrogate mother में इसे implant किया गया and surrogate mother ने एक first Dorset lamb को जन्म दिया था and this is named as Dolly. So ऐसे ही अब आप देख सकते हो सेल फ्यूजन के आप देख सकते हो कि कैसे न्यूक्लियस जो है डोनेट हुआ और उसे रिमूव करके मैमरी ग्लैंड से रिमूव किया गया था. ये डोनर सेल्स हैं, यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे इम्प्लांट किया गया था. So now let's read about this. The procedure of cloning Dolly the sheep. In the process of cloning Dolly, a cell was collected from the mammary gland of female Finn Dorset sheep. So Finn Dorset sheep जो था उसके mammary gland से जो है सेल को लिया गया था. Simultaneously an egg cell was obtained from the Scottish black face eve. So उस सेम टाइम पे एक एग सेल जो है एक स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव से भी लिया गया था. It was followed by the removal of nucleus from the egg of the Scottish black face eve. So अब जो है जो Scottish black face eve था उसके egg में से nucleus को remove कर दिया गया था. Then the nucleus of the mammary gland cell obtained from the female Finn Dorset sheep was inserted into the egg of Scottish black face eve. यहाँ पे इंसर्ट किया गया सेल को. The egg thus produced was implanted into the Scottish black face eve. और इस egg को implant किया गया था इस sheep में and the egg developed normally and gave birth to the sheep Dolly. और ये egg जो है अपने आप normally बड़ा होता गया और इसने birth दिया sheep Dolly को. In spite of being born in of Scottish blackface eve, sheep Dolly did not resemble any characteristic with the Scottish blackface eve. भले ही वो Scottish blackface eve की बॉडी से उसने जन्म लिया था लेकिन उसके कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स उससे मिल नहीं रहे थे. This is because the nucleus of Scottish blackface eve was removed. ये इसलिए हुआ क्योंकि न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया गया था. And the nucleus Scottish black face eve was removed and the nucleus of Finn Dorset sheep was inserted. और Fish Dorset sheep का जो न्यूक्लियस था उसे इंसर्ट कर दिया गया था, which led to the inheritance of all the characteristics and the resemblance of Finn Dorset sheep in Dolly. So जिसकी वजह से जो Finn Dorset sheep था उसके सारे characteristics Dolly में आ चुके थे. Dolly was a healthy clone. Dolly जो है एक healthy clone था and gave birth to some offsprings of her own through sexual means. So उसने अपने जैसे कुछ और offsprings को पैदा किए sexual means से. Owing to a severe lung disease, Dolly died unfortunately. So अब जो है Dolly को जो है एक severe lung disease हो गई थी काफी टाइम के बाद, तो उसकी death हो गई. क्लोनिंग ऑफ डॉली वॉज अ सक्सेसफुल अटेम्प्ट. डॉली को सक्सेसफुली क्लोन करना एक बहुत इम्पोर्टेंट और सक्सेसफुल पार्ट था. सिंस
several attempts had been made to produce clone. डॉली के बाद भी बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए गए थे क्लोन बनाने के लिए. However, many clones died before birth. कई बार क्या हुआ, ये जो क्लोन्स था ये बर्थ से पहले इनकी डेथ हुई, और soon after the birth, या तो बर्थ के बाद इनकी डेथ हुई. Sometimes clone also lead to certain abnormalities among clones. और कई बार क्या हुआ कि इन क्लोन्स में कुछ abnormalities भी देखने को मिली गई. Now children, let's learn about the sexual reproduction in humans. In humans, reproduction is done most commonly by way of sexual reproduction. So humans में ये जो है sexual reproduction से ही किया जाता है. And in this method, two parents participate in producing their offspring. So एक offspring को बनाने के लिए तो parents important है. In this process, among the parents participating, one is a male and the other is a female. So इस केस में जो पेरेंट हैं इसमें से एक मेल होता है तो दूसरा फीमेल होता है. In simple words, sexual reproduction takes place. और अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो होता है by way of fusion of the reproductive cells. So जो reproductive cells है उनके fusion से ये possible होता है. The reproductive cells are often termed as gametes. और ये जो reproductive cells हैं इन्हें gametes भी कहा जाता है. There are two types of gametes produced by both the parents. So दो तरीके के gametes हैं जो दोनों parents produce करते हैं. The one produced by the reproductive organ of the male parent is known as a male gamete. So एक जो male parent produce करता है उसे male gamete कहा जाता है और the sperm उसे sperm भी कहते हैं. And the ones produced by the reproductive organ of the female parent are called female gametes. और female parents जिसे reproduce करती हैं उसे कहते हैं female gametes या फिर ova या फिर egg. So here you can see a human sperm, which is a male gamete, highly enlarged. This is the tail. Here the nuclei is there. Then the cytoplasm, middle piece, and the head. So this is a part of human sperm. Now structurally, in males, the male gametes usually consist of the head bearing the nucleus. So यहाँ पे जब हम मेल गैमेट्स की बात करते हैं तो ये जो है यहाँ पे एक हेड होता है और it consists the nucleus which relatively lesser cytoplasm. cytoplasm कम होता है. Attached to a long tail, जो एक लंबी सी टेल में अटैच होता है, which helps the male gamete to move around. ये टेल क्या करता है, मेल गैमेट्स को आगे जाने में हेल्प करता है. On the other hand, the female gametes consist of a large nucleus. अगर हम दूसरी तरफ देखा जाए तो जो फीमेल गैमेट होता है, here is the female gamete, इसमें जो है it consists of large nucleus. इसके अंदर एक बड़ा सा न्यूक्लियस होता है, having more cytoplasm. इसमें बहुत सारा cytoplasm included होता है. So here this is the human egg or ovum, and it is a female gamete. And it is highly enlarged. So this cytoplasm helps in providing nutrients to the growing embryo. ये cytoplasm क्या करता है, जो embryo grow करता है उसे जो है nutrient देता है. Once the male gamete and the female gamete unite with each other. So जब ये male gamete जाके female gamete से मिल जाता है. Here you can see so many male gametes are there. And this is going to fertilize. So जब ये जाके उससे मिलता है, they form a structure called zygote. तो ये क्या बनाते हैं, आपस में मिलके एक zygote बनाते हैं जिसे हम fertilized egg कहते हैं. ये you can see mixing of cell, nuclei and chromosomes to ovum and sperm. So zygote बनता है which is fertilized egg. This happens when the nuclei of the sperm and the egg unite to form a single nucleus. और ये तब होता है जो ये न्यूक्लियाई है स्पर्म का और एग दोनों मिलके
एक सिंगल न्यूक्लियस बनते हैं। अब आप देखो यहाँ पे एक सिंगल न्यूक्लियस बन गए। The process of the union of the male and the female gamete is known as fertilization. और इन दोनों को जब ये मिल जाते हैं तो fertilization is completed. अब यहाँ पे fertilization जो है complete हो चुका है। Just after the process of fertilization, the zygote grows and further divides repeatedly. अब fertilization के बाद क्या होता है, जो zygote है वो divide होता है और grow होता है और divide होने लगता है। A ball of cell is formed due to the repeated division of zygote. So एक ball है cells का, वो बन जाता है बार बार zygote के divide होने से। These cells later unite to form different organs. और ये सेल्स जो है बाद में जाके यूनाइट हो जाते हैं, एक हो जाते हैं और डिफरेंट ऑर्गन्स बन जाते हैं एंड टिश्यूज ऑफ द बॉडी। सो ये जो है मिलके क्या बनते हैं, अलग अलग जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं और टिश्यूज बन जाते हैं। एंड द स्ट्रक्चर सो डेवलप इज टर्म एज एन एम्ब्रियो, और इस स्ट्रक्चर को एम्ब्रियो कहते हैं। लेटर द एम्ब्रियो फर्दर डेवलप्स एंड thus an individual comes into being. और धीरे धीरे ये एम्ब्रियो जो है बड़ा होता है साइज में और धीरे धीरे एक इंडिविजुअल, ऐसा कहा जाता है कि इंडिविजुअल हैज कम इनटू बीइंग। नाउ चिल्ड्रन, लेट्स लर्न अबाउट द मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स। द फर्स्ट इज टेस्टिस, द प्लूरल ऑफ व्हिच इज टेस्टिस। So these are two oval shaped endocrine glands present in the males. So males में ये दो oval shaped endocrine glands जो present होते हैं। Testes are made up of several coil tubes. ये बना होता है जो बहुत सारे coil tubes होते हैं उनसे। That produce millions of male gametes. जो क्या करते हैं, हजारों millions of male gametes को produce करते हैं, called sperm. These sperms are small in size and consist of a head. So ये जितने भी sperms होते हैं इनका size काफी small होता है और इनका एक head होता है, a middle piece and a tail, जैसा भी हमने पढ़ा था। Next is vas deferens, which is sperm duct. This is a narrow tube joining the testes and urethra. So ये जो tube है ये testes और urethra को join करता है। Various glands produce different fluids inside this tube. So अलग अलग जो glands हैं वो अलग अलग fluids को इस gland में produce करते हैं, which mix with the sperm, जो sperm के साथ क्या होता है, mix हो जाता है, and forms a fluid called semen, जो मिल के क्या बनाता है, एक fluid बनाता है जिसे semen कहा जाता है। The semen is carried to the urethra by the muscular action of the walls of vas deferens. So ये जो semen है ये यूरेथ्रा तक जाता है मस्कुलर एक्शन से, जो वॉल्स हैं उनके मस्कुलर एक्शन से जाता है। एंड नाउ द नेक्स्ट इज यूरेथ्रा, अ नैरो ट्यूब दैट रन्स थ्रू द पेनिस टू द आउटसाइड इज कॉल्ड यूरेथ्रा। सो ये जो यूरेथ्रा है ये एक नैरो ट्यूब है जो पेनिस से लेके आउटसाइड तक जाता है यूरेथ्रा के। एंड द यूरेथ्रा एट डिफरेंट टाइम कैरीज बोथ सीमेन एंड यूरिन। सो ये जो यूरेथ्रा इसका काम है दोनों सीमेन और यूरिन दोनों को कैरी करना। नेक्स्ट इज पेनिस। यूरेथ्रा ओपन्स इनटू अ मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड पेनिस। सो ये जो यूरेथ्रा है ये ओपन होता है जाके एक मस्कुलर स्ट्रक्चर जो है जिसे कहते हैं पेनिस, एंड इट इज penis that transfers the semen and with it the female body. So ये penis ही है जो ट्रांसफर करता है semen को female body तक। Human male attain sexual maturity at 14 to 15 years. So जो human males होते हैं उनकी जो sexual maturity है वो 14 से 15 years तक हो जाती है। At this age they start producing sperm, और इस एज तक आते आते वो sperm को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। So children, here you can see the male reproduction system in humans.
and the different glands are mentioned here. Now let's learn about the female reproductive system. So the female reproductive system has the following organs. Ovary. So ovaries are the two almond-shaped endocrine glands present in the female body. So ये जो ovaries होती हैं ये almond-shaped होती हैं, ये endocrine glands हैं और ये human body के अंदर जो female body है उनके अंदर present होती है. These ovaries produce female gametes called ova. अब ये female gametes बनाते हैं जिसे ova कहते हैं. And the singular is ovule. Next is fallopian tube. So this is the fallopian tube, which is also called oviduct. These tubes are meant for carrying ova. अब ये क्या करते हैं? ओवा को कैरी करते हैं. इनका काम होता है इसे कैरी करना. And released by the ovary for fertilization. और ovaries इन्हें release करती हैं fertilization के लिए. Here you can see the female reproductive system in human. Next is uterus. The fallopian tubes open in a wide, thick, walled muscular chamber called the ureterus or womb. So ये जो fallopian tube है वो कहाँ जाके खुलता है? इसका जो mouth होता है वो काफी ज़्यादा wide होता है, thick होता है और muscular chambers होते हैं जिसे हम uterus या फिर womb भी कहते हैं. It is the organs inside which the embryo grows and develops. So ये वो जगह है जहाँ पे जो embryo है वो grow करता है, develop करता है. Next is vagina. The uterus communicates outside through a muscular passage called vagina. So ये जो uterus है ये communicate करता है, एक muscular passage है उसके through जिसे हम vagina कहते हैं. And during sexual intercourse, this body part receives the penis. So जब sexual intercourse होता है तो इस body part में ये body part penis receive करता है. Females start producing ovum at the age of 11 to 12. So ये जो females हैं ये ovum produce करने लगती हैं 11 से 12 years की age तक. At this age they start attaining sexual maturity. और इस age में जाके वो sexual maturity attain करने लगती है. Now, what is fertilization? The process of fusion of the male and the female gametes to form a new organism is termed as fertilization. So जब ये male और female gametes एक साथ मिलते हैं तो इसी term को हम fertilization कहते हैं. एक नया organism पैदा होता है. In this process, the sperm and the ovum unite to form an individual. So इस process में क्या होता है? जो sperm होता है और जो ovum होता है वो एक साथ मिलके एक individual बनाते हैं. However, in the process of fertilization, a number of stages take place. So अब इस fertilization के process में बहुत सारी चीजें चलती हैं. Before the union of the sperm and the egg. So sperm और egg के मिलने से पहले बहुत सारे stages आते हैं. The main stage involved in the process of fertilization include the following. So क्या main stage है जिसमें fertilization को include किया जाता है? The female egg or the ovum gets released once every month in a female parent. So जो female parent है उनकी body में ये जो ovum है हर महीने में एक बार release होता है. During the process of reproduction and the process of the release of the egg or the ovum from the ovary of the female parent is known as ovulation. और इस process को ही ovulation कहते हैं. This ovum once released moves into the oviduct also known as the fallopian tube. So ये जो ovum है जब ये release होता है ये fallopian tube से गुजरता हुआ जाता है. During the process of sexual intercourse, the male gamete enter the vagina of the female parent through the penis and travel through the narrow opening present just above the vagina called the cervix. So cervix एक place है woman body में जहाँ पे जब ये इंटरकोर्स होता है तो उस समय ये स्पर्म जो है वजीना में प्रेजेंट चला जाता है एंड इट ट्रेवल्स थ्रू अ नैरो ओपनिंग. सो ये ट्रैवल करता है एक नैरो ओपनिंग से और वहां पे जाके ये फर्टिलाइज हो जाता है. ये यू कैन सी हियर द insemination occurs and you can see the path of sperm is given here.
नाउ स्पर्म स्वार्म अराउंड एग. सो एग के चारों तरफ आप देख सकते हो स्पर्म्स आर देयर. हेड ऑफ स्पर्म एंटर एग. सो जिस भी सो ये जो हेड आप देख सकते हो स्पर्म का, ये एग के अंदर एंटर करता है. एंड देन the fertilization occurs and a new membrane forms to prevent further entry of sperm. So एक नया membrane बन जाता है जो बाकी sperms को अंदर आने से रोक देता है. The sperm then enters the uterus and finally the oviduct. ये sperm जो है uterus में जाता है और finally oviduct में जाता है, where it unites with the ovum, जहाँ पे जाके ये ovum के साथ मिल जाता है. And thus fertilization takes place. और इसके बाद ही fertilization start होता है. The fertilized eggs then travel from the oviduct into the uterus, where the fertilized egg attaches itself to the wall of the uterus and grows into a human embryo. So ये जो fertilized egg है, ये travel करता है oviduct तक जाता है जो uterus में है, जहाँ पे ये fertilized egg जो है अपने आप को attach कर लेता है uterus के wall से और वहीं पे वो ग्रो करता है एक ह्यूमन एम्ब्रियो में. डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो. वंस द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज ओवर, द जाइगोट गेट्स फॉर्म. सो जैसे ये फर्टिलाइजेशन खत्म हो जाता है तो जाइगोट बन जाता है. दिस जाइगोट फर्दर डेवलप्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो. और ये जाइगोट आगे जाके एम्ब्रियो बन जाता है. हाउएवर दिस हैपेंस व्हेन द जाइगोट बिगिंस टू डिवाइड रिपीटेडली. और ये तभी होता है जब जाइगोट जो है बार-बार अपने आप को डिवाइड करता है and forms different group of cell और अलग-अलग group of cells बनाता है. These group of cells further develop to take the shape of different tissues and organs. और ये group of cells जो आगे जाके अलग-अलग tissues और organs बन जाते हैं. This structure where these developments take place is called embryo. इस structure को जहाँ पे ये सारी चीजें होती हैं उसे ही embryo कहते हैं. The embryo attaches itself to the wall of the uterus. Embryo जो है अपने आप को uterus के wall पे attach कर लेता है and grows further to form the baby. और ये आगे जाके baby बन जाता है. Another structure called the placenta forms at the place. अब एक और structure बन जाता है जिसे placenta कहते हैं. ये you can see this is the placenta. So ये placenta बन जाता है where the growing embryo is attached to the wall of the uterus. The stage of the embryo's development in which the development and the emergence of the various body parts such as the hand, feet, the eyes, etc. can be identified is called the fetus. So वो stage जहाँ पे हम इन body parts को recognize करने लग जाते हैं उस stage को हम कहते हैं fetus. So here you can see walls of uterus and amniotic sac, a fluid-filled bag which helps to protect the fetus. Here this is our vagina and umbilical cord connects fetus to the placenta and here this is our fetus. Now you can see the different stages: fertilized egg, 2-cell stage, then 4-cell stage, 8-cell stage, 16-cell and blastocyte. अब धीरे धीरे ये जो है सारे cells rearrange होके fetus बन जाते हैं which is 4 week. ये 4 week का child है and the fetus grows into a 10 week. This is a 10 weeks child. Next this is a 16 weeks child and this is a 20 week child which is a fully mature child. A baby's heart begins to beat 21 days after conception. So conceive करने के 21 days के बाद जो baby का heart है वो beat करना start कर देता है. So here children, a table is given. Let's read what is in this. Zygote and embryo. Zygote is a single cellular and embryo is multicellular. Zygote does not have well-defined body parts and it has well-defined body parts. It is formed during fertilization where sperm fuses with ovum. So ये जो form किया जाता है fertilization के समय जहाँ पे sperm आके fuse होता है ovum से and it is formed after the fertilization process is over. ये तब बनता है जब fertilization process खत्म हो जाता है. Whereas zygote starts multiplying to form a multicellular body. जहाँ पे zygote जो है आगे जाके एक multicellular body बन जाता है.
Now, what is gestation period and childbirth? The phase beginning right from fertilization till the time of baby is born is called the gestation period. So वो टाइम जब एक फर्टिलाइजेशन खत्म हो जाता है और बेबी के ग्रोथ करने का टाइम मीन्स बेबी के बॉर्न होने तक के टाइम को हम जेस्टेशन पीरियड कहते हैं. इन फीमेल ह्यूमन पेरेंट्स दिस पीरियड यूजुअली लास्ट फॉर 9 months और फीमेल ह्यूमंस में ये 9 months का पीरियड होता है. And during this period, the female parent is commonly known to be pregnant. और इस पीरियड में जो फीमेल पेरेंट होती है उसे प्रेग्नेंट कहा जाता है. Finally, when the female parent gives birth to the fully developed fetus in the form of a well-developed baby, this process is called parturition. So, अब जो है जब टाइम आ जाता है जब ये फीमेल पेरेंट जो है अपने बेबी को फुल्ली ग्रोन फीटस को जो है जो वेल डेवलप हो चुका है इसे बर्थ देती है, तो इस प्रोसेस को हम पार्चुरेशन कहते हैं. Care after birth. As a newborn baby is very small, a great care is required to look after it. A mother feeds her baby. So अगर जब ये न्यूबॉर्न बेबी डेवलप होता है, जब वो आता है तो उसे काफी ज्यादा केयर की जरूरत होती है, उसको बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है. सो मदर फीड्स हर बेबी, मदर अपनी बेबी को फीड करती है मिल्क एंड टेक्स वेरी गुड केयर ऑफ द बेसिक नीड्स और उसके जो भी बेसिक नीड्स हैं उसका ध्यान रखती है. Mother's milk is the best for babies as it contains all the essential nutrients and provides immunity and resistance against so many diseases. So mother's milk जो होता है वो काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है क्योंकि इसके अंदर सारे essential nutrients होते हैं जो बच्चे को इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है और उसको बीमारियों से बचाता है. A newborn baby also needs vaccination against various diseases. अब जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसे वैक्सीनेशन की भी जरूरत होती है, बहुत सारी बीमारियां हैं उसके लिए, तो वैक्सीनेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. If vaccination is not provided on time, it may lead to several diseases while growing. अगर वैक्सीनेशन टाइम पे नहीं गया तो बहुत सारी बीमारियों में गिर सकती है. Now, types of fertilization. Fertilization is of two types: internal fertilization, and what is it? In this type of fertilization, the fusion of male and the female gametes take place inside the female body. So, ये जो internal fertilization इसमें जो भी fusion है वो मेल और फीमेल का उनकी बॉडी के अंदर ही फीमेल बॉडी के अंदर होता है. Example of organisms that reproduce through internal fertilization are insects, birds and mammals like cow, dogs, cats and human beings. So ये जो भी mammals हैं, जो भी birds हैं या जो insects हैं, ये internal fertilization को carry on करती हैं. Now the next is external fertilization. In external fertilization, fusion of male and female gametes take place outside the female body. So ये जो चीजें हैं ये female body के बाहर होती हैं. And example of the organisms that reproduce through external fertilization are frog, fish, starfish. Let us discuss the example of frogs. So let's see what is the example. During rainy season, frogs move to slow flowing stream of water and ponds. So जब rainy season आता है तो ये जो frogs हैं स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स की तरफ जाते हैं, मीन्स ऐसे पानी की तरफ जाते हैं जो बहुत ही हल्का चलते हैं. When male and female come in close contact with each other, जब मेल और फीमेल एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, फीमेल फ्रॉग्स lay hundreds of eggs. So इस समय क्या होता है, ये जो फीमेल फ्रॉग्स हैं वो 100 of eggs lay करती हैं. Frogs eggs are very delicate and not protected by any shell. ये जो फ्रॉग के एग्स होते हैं वो काफी ज्यादा डेलिकेट होते हैं और कोई भी सेल इन्हें प्रोटेक्ट नहीं करता. Unlike hen's egg, they are in jelly layers. ये जेली के फॉर्म में होते हैं. That holds these eggs together and protect them. So ये क्या होता है, ये जेली फॉर्म में होता है और एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं. Male frogs then deposit sperm over these eggs. मेल फ्रॉग्स क्या करते हैं, इन एग्स के ऊपर स्पर्म को डिपॉजिट कर देते हैं. The sperm swims in water with the help of the long tail and hence comes in contact with the female eggs. So ये जो sperm है ये इनके एक टेल होते हैं जिससे ये आसानी से जो है स्विम करते हैं और फीमेल एग से आके कांटेक्ट में आते हैं.
This ultimately result in external fertilization और इसके बाद ही external fertilization होता है. Here you can see the difference between the internal and the external fertilization. In the internal fertilization, fusion of male and female gametes take place inside the female body, but in the external fertilization, fusion of male and female gametes take place outside the female body. A smaller number of ova or eggs are produced and a large number of eggs are produced. Offsprings have high chance of survival, offsprings have low chance of survival. It takes place mostly in mammals, example, human being, cow, hen, etc. And it takes place in fish, frog, starfish, etc. Artificial fertilization. Artificial fertilization is a process by which the sperm of the female and the female egg get united in the way which is not natural. So, unnatural तरीके से ये fertilization किया जाता है. It is done in case wherein the male sperm is unable to unite with the female egg present in the oviduct. So, ये तब होता है जब male sperm जो है female egg से unite नहीं हो पाता है oviduct में. So this happens especially in case where the oviduct of the female parent is found to be blocked. So ये तब होता है जो oviduct है female parent का वो block होता है, तो इस केस में जो male sperm है वो नहीं meet कर पाता उससे. As a result, such female parents fail to give birth to baby naturally. और इन cases में क्या होता है, जो female parents हैं वो अपने baby को naturally birth नहीं दे पाते. However, this problem can be solved using a technique called in vitro fertilization, which is IVF. So ये problem जो है solve कर ली गई है IVF के through, इसे possible किया जा सकता है, through which test tube babies are born, जिसमें जो है test tube babies born होते हैं. In vitro fertilization or IVF is means in which the male sperm and the female egg fuse in the laboratory. So इस केस में क्या होता है, जो मेल स्पर्म है और जो फीमेल एग है उन्हें लैबोरेटरी में फ्यूज किया जाता है outside the human body, as a result of which fertilization takes place outside the female parent's body. अब इस केस में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन जो है फीमेल पेरेंट की बॉडी से बाहर होता है. Once fertilization takes place, a zygote gets formed. और जैसे ही फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है zygote फॉर्म हो जाता है. This zygote is then allowed to develop further for about a week time. और इस zygote को एक हफ्ते के लिए और रखा जाता है ताकि और अच्छे से डेवलप हो जाए. And is then placed into the uterus of the female parent. और बाद में जाके इसे फीमेल पेरेंट के बॉडी में इंसर्ट कर दिया जाता है. This way the zygote grows and divides further to form an embryo. और इस तरीके से zygote जो है जाके जो डिवाइड हो जाता है और एम्ब्रियो बनाता है, which later on develops into a baby in about 9 months time. और जो है जाके एक बेबी बन जाता है 9 months में. The babies developed by this technique are called test tube babies. और ऐसे जो babies होते हैं उन्हें test tube babies कहा जाता है. The technique of artificial fertilization was first successfully implanted on a human body in 1978. So ये जो टेक्निक है पहली बार ह्यूमन बॉडी पे हुआ था 1970 with viviparous and oviparous animals. Animals can be divided into two types based on how they give birth to their young ones. So animals को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. कैसे कि वो किस तरीके से अपने बेबीज को बर्थ देते हैं. Animals that give birth to young ones are called viviparous animals. So वो animals जो अपने बेबीज को बर्थ देते हैं उन्हें हम viviparous animals कहते हैं. Mammals like cat, dog, horse and human beings are the example of viviparous animals. Animals that lay eggs and hatch them into offsprings are called oviparous animals. So वो animals जो eggs देते हैं उन्हें hatch, उनमें से baby hatch होते हैं, इन्हें हम oviparous animals कहते हैं. The example of oviparous animals are snakes, butterflies, frogs and birds. In oviparous animals like hens, an embryo develops in a different manner. So hen के केस में जो embryo है वो एक अलग तरीके से develop करता है. After fertilization, when the zygote is mature enough, fertilization के बाद जब ये zygote जो है काफी ज़्यादा mature हो जाता है, it divides
repeatedly, ये divide करता है बार बार. The zygote then travels down the oviduct, और ये zygote जाता है oviduct में travel करता है, and several protective layers start forming around it, और उसके आसपास हजारों protective layers बन जाते हैं. The hen starts laying the egg as soon as the hard shell is formed. और जैसे ये हार्ड शेल बन जाता है, hen जो है क्या करती है, एग को ले करना स्टार्ट कर देती है. The hen then gives warmth to the eggs by sitting over them. अब hen क्या करती है, इन eggs के ऊपर बैठ के इन्हें जो है वार्म करती है. Development of the chicks start taking place inside the cell. और जो डेवलपमेंट है इन चिक्स का इस शेल्स के अंदर स्टार्ट हो जाता है. It takes about 3 weeks for the embryo in order to develop into a chick. So एक एम्ब्रियो को चिक बनने में 3 हफ्ते का टाइम लगता है. Their eggs shell burst open once the chick get matured enough to come out. और ये जो egg shells है वो burst हो जाते हैं जब ये chicks जो है mature हो जाते हैं, बाहर होने लायक हो जाते हैं. Here you can see the picture of egg and how it fuses and how baby chick is born. What is metamorphosis? The young ones of mammals and newly hatched birds look similar to their parents. So ये जो young ones होते हैं या जो newly hatched birds होते हैं, ये अपने parents की तरह ही दिखाई देते हैं. However, there are some insects and animals whose young ones look quite different from the adult and undergo a series of change after birth. लेकिन कुछ ऐसे animals या फिर insect होते हैं जो अपने parents से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं और काफी ज्यादा change होते हैं. The features of these young ones are completely different from the adult. इनके जो features हैं वो अपने parents से काफी अलग होते हैं. A biological process in which larva transforms into an adult involving sudden and abrupt changes in the body of the animals during the life cycle of the invertebrates or amphibians are called metamorphosis. So ये जो biological process है जिसमें जो है लार्वा जो है ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक एडल्ट में, जिसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं बॉडी में एनिमल्स के, एंड ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ इनवर्टिब्रेट्स या एम्फीबियंस, इसे ही मेटामॉर्फिस कहते हैं. मेटामॉर्फिस इन फ्रॉग्स. फ्रॉग्स अंडरगो 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस इन इट्स लाइफ साइकिल. सो फ्रॉग्स जो है इनका जो है स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है हर लेवल पे. पहले ये एग रहते हैं, फिर लावा बनता है जिसे टैडपोल भी कहते हैं, और फिर बाद में ये जाके एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं. The various changes that occur during the life cycle of a frog are shown in the figure given below. Now here you will find that a tadpole is totally different from the adult frog. So आप यहाँ पे देखोगे कि जो tadpole है वो adult frog से काफी ज्यादा different होता है. It has to gradually undergo some changes. कुछ changes होते हैं उसके अंदर ये जाता है during its life cycle to develop into a complete different form of an adult frog. This process of change by which the tadpole changes into an adult frog is called metamorphosis in frogs. All the changes are controlled by the hormone thyroxine. So ये जो thyroxine hormone है वो रिजल्ट करता है, वो चेंज करता है जो भी चीजें हैं इसके अंदर उसे कंट्रोल करता है, हार्मोनल चेंजेस को कंट्रोल करता है. सो ये यू कैन सी देयर इज एन एडल्ट फ्रॉग, एग्स, देन एग्स फॉर्म टू मेक एम्ब्रियो, टैडपोल क्लिंगिंग इन वाटर प्लांट. आप देख सकते हो टैडपोल्स है यहाँ पे, एक्सटर्नल गिल्स फॉर ब्रीदिंग, टेल कीप्स ऑन ग्रोइंग, अब टेल इनकी ग्रो हो रही है. हिंड लेग्स अपीयर, अब हिंड लेग्स निकल के आगे बाहर. लिव्स फ्रॉम फूड स्टोर्ड इन द टेल, जो भी फूड रहता है स्टोर रहता है टेल के अंदर, उसकी वजह से यहाँ पे रहते हैं जीवित. फ्रंट लेग अपीयर, अब फ्रंट लेग आगे इनकी, टेल बिकम शॉर्टर, अब धीरे धीरे टेल जो है छोटी होती जा रही है. एंड देन दे फॉर्म इनटू अ यंग फ्रॉग, और उसके बाद ये यंग फ्रॉग एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है. मेटामॉर्फोसिस इन बटरफ्लाई, बटरफ्लाई में कैसे होता है? The life cycle of a butterfly undergoes the following changes, and it is egg, then larva, then pupa, and then adult. So आप देख सकते हैं यहाँ पे egg है, फिर young caterpillar बना, फिर ये caterpillar जो है grow कर रहा है, और next ये pupa में convert हो गया, pupa is grown up, pupa is ripen up,
Now emerging butterfly is coming out, adult butterfly comes out, and again it lays eggs. So the various changes that occur during the life cycle of a butterfly are shown here. We have read that. In this case, the larva, which is the caterpillar, and pupa possess completely different features from the adult butterfly. So आप देख सकते हो adult butterfly से कितने different है ये सारी चीजें. This transformation of the larva into the adult through the series of drastic changes is called metamorphosis in butterfly. All these changes are controlled by two hormones named ecdysone hormone and juvenile hormone. Now, what is adolescence or pregnancy? Every year, 16 million children are born worldwide to girls aged below 18 years. So, क्या होता है कि हर साल 16 मिलियन बच्चे जो हैं born होते हैं और किससे? जो 18 years से कम girls हैं उनसे. Adolescence pregnancy is the age group of 15 to 19 years of and is dangerous to both the mother and the child. So adolescence pregnancy क्या होती है? ये वो pregnancy होती है जो 15 से 19 years के बीच में girls को हो जाती है और ये बहुत ज़्यादा dangerous है mother के लिए भी और उस बच्चे के लिए. As a woman is not mentally and physically prepared for giving birth to a baby at this age, क्योंकि एक जो गर्ल है वो मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं है एक बेबी को बर्थ देने के लिए. Proper education should be provided to all the people and we should raise our voice against girls exploitation. So everybody should be given proper education. Proper education मिलना चाहिए और हमें वॉइस को रेज करना चाहिए जो गर्ल्स एक्सप्लॉयटेशन है उसके खिलाफ. एंड अर्ली मैरिजेस आल्सो. In India, especially in rural areas, some orthodox people still blame the mother for the birth. So India में जो है अभी भी जो रूरल एरियाज वहाँ पे अभी भी जो है लोग जो मदर को ही ब्लेम करते हैं ऐसी चीजों के लिए of a girl child. However, scientifically, the father's sperm is responsible for determining the gender of the child. लेकिन जो फादर का जो स्पर्म है वही रिस्पॉन्सिबल होता है कि बॉय होगा या फिर गर्ल होगी. बट लोग क्या करते हैं मदर को रिस्पॉन्सिबल कहते हैं कि शी इज ऑलवेज हैविंग अ गर्ल. सच जेंडर मिथ्स स्टिल एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी और ऐसी जो चीजें वो आज भी हमारी सोसाइटी में. एंड वुमेन आर बीइंग टॉर्चर्ड फॉर गिविंग बर्थ टू गर्ल चाइल्ड. और वुमेन्स को आज भी टॉर्चर किया जाता है गर्ल चाइल्ड को बर्थ देने के लिए. सच मिथ्स कैन बी completely eradicated from the society by providing basic education to the society. ऐसी चीजों को हम तभी खत्म कर सकते हैं सोसाइटी से जब इन लोगों को बेसिक एजुकेशन मिले. Now children, let's revise what we have learned. Two modes of reproduction are sexual reproduction. In Hydra, two new individual develop from birth. And in amoeba, reproduces by dividing itself into two. The reproductive organ in male include testes, sperm duct, and penis. The reproductive organ in the female includes ovaries, oviduct, and uterus. The ovaries produce female gametes called ova, and the testes produce male gametes called sperm. Ovum and sperm fuse together to form the fertilized egg called zygote. Fertilization is of two types, internal and external. That zygote divides repeatedly to give rise to an embryo. The embryo gets embedded on the wall of the uterus and further development. Embryo develops to form fetus and a stage when all the body parts are developed. Gestation period is of 9 months in humans. Adolescence pregnancy is dangerous for both mother and the child as the girl is not mature enough. Now children, let's answer these questions. Name the process of producing the young ones of their own kind. So what is this process called? This is called fertilization. Now name the process of producing an identical cell or any living organism by asexual means. Name the process of the union of the male and the female gametes.
Name 2 oval-shaped endocrine glands present in the male. Name the phase beginning right from fertilization till the time of baby is born. So this phase is called gestation period. What is meant by fetus? How are gender issues and myths causing problem in the society? Describe the importance of the reproduction in brief. Differentiate between the following terms: zygote and embryo, internal and external fertilization, asexual and sexual reproduction, oviparous and viviparous animals. So children, I hope that you have understood the chapter and you have to complete the exercises that is given to you as homework. I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay rated.